So next method of preparation is we did it from dialkyl cadmium, Grignard reagent. We did the different mild oxidizing agents. We did Sarat's reagent, 2:1 ratio with the chloromethane as solvent. Then we did, after that is Collins reagent. Collins reagent is the same, but the solvent is, and in first case the solvent was pyridine. In first case, that is in Sarat's reagent, the solvent was pyridine, but we said the product is organic, solvent is organic, so it's very difficult to separate it. So when in second case we did the modification in Collins reagent by changing the solvent to dichloromethane, and then we did the third reagent was Corey's reagent, wherein Corey's reagent we did that it is 1:1 ratio of CrO3, pyridine and HCl, also called pyridinium chlorochromate. Then we did PDC, pyridinium dichromate, which was also a mild oxidizing agent. We thereafter did Jones reagent. Jones reagent is CrO3, HCl, H2SO4 in acetone solvent. You will take this in aqua solvent. It's a very strong oxidizing agent, but by taking the solvent acetone, you are making it mild. Then we did MnO2, was a mild oxidizing agent. Then we did the Rosenmund reduction, where it was hydrogenation. This is palladium is the catalyst, and thereafter we said that barium sulfate or sulfur or quinoline, they are used as negative catalyst, and that negative catalyst is the poison for the catalyst, so that the further reduction of aldehyde should not occur into alcohol. तो यहाँ अगर हम catalyst देखें तो catalyst is hydrogenation with palladium, but barium sulfate, sulfur, quinoline, they act as negative catalyst. So after doing this, we did Stephan reduction. We did the reduction with the Dibal. We did the Itard reaction. That this is oxidation of toluene. Otherwise, this will be forming benzoic acid, but with CrO2Cl2, that is Itard reagent. This form a brown complex, and this complex prevent the further oxidation of the geminal compound into, means this benzaldehyde cannot be oxidized further into benzoic acid, and this CrO2Cl2 is chromyl chloride, is a mild oxidizing agent. Is mild oxidizing agent. The same case, if you do this oxidation with CrO3, which is an oxidizing agent, this toluene will get converted into benzoic acid. Yes or no? But we don't want benzoic acid at all. What we want is that this reaction, this oxidation should occur only up to aldehydic level. So we cannot use this. क्योंकि अगर आप इसको use करोगे, this will be powerful oxidizing agent. So what you did is, आपने उस CrO3 को तो use किया, but किसमें use किया is acetic anhydride.
CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड में क्या एक्ट कर गया? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वो जो टॉलुइन है वो एनहाइड्राइड के साथ दैट विल बी फॉर्मिंग ज़ैमिनल एसीटेट। And this ज़ैमिनल is when the two groups are present on the same carbon. So this ज़ैमिनल acetate when will be, this will give back anhydride and the oxidation product. Now you won't be getting any acid, but you will be getting aldehyde, which won't allow the further oxidation. Is it okay? Now the very important next method of preparation, which we have already done, that was Gatterman-Couch reaction. We did this. The next reaction for the preparation was this. We also did Gatterman-Couch formylation reaction. Is it okay or not? So the next method of preparation is preparation of carbonyl compound from acid halide. So there is a question given to prepare carbonyl compound from acid halide. We should not use Grignard reagent. To prepare carbonyl compound from acid halide, we should not use Grignard reagent. But he is saying if you want to prepare it, you use dialkyl cadmium. You use dialkyl cadmium to get this converted into the carbonyl compound. So the question arises, why? Why so? ऐसा क्यों? ऐसा क्या है जो उसमें गड़बड़ है और ऐसा क्या है जो इसको यूज करना चाहिए? इसके लिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करते हो, उस रिएक्शन में ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। यस, in the same manner this dialkyl cadmium also, cadmium is metal, both are organometallic compounds. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब हुआ कैडमियम के ऊपर यहां पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है। बट द मेन थिंग इंपॉर्टेंट इज कि ये जो कैडमियम है, दिस कैडमियम इज ट्रांजिशन मेटल एंड दिस मैग्नीशियम इज alkaline earth metal. This magnesium is less electronegative than cadmium. अगर ये less electronegative है, it means magnesium metal is more reactive. मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज
जल्दी आएगा। सो मैग्नीशियम, इट मीन्स Grignard reagent is more reactive than dialkyl cadmium, क्योंकि Grignard reagent के अंदर कौन है? मैग्नीशियम है। सो आई शुड से RMgX ड्यू टू Mg is more reactive than dialkyl cadmium. अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि आप मुझे बताइए नेचर ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड दैट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इज एडिशन। अगर आपसे कोई ये पूछे, देखिए भाई सब्स्टिट्यूशन होनी है तो पहले एडिशन तो होगी। अरे सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई आया तो किसी को जाना होगा। इसका मतलब अगर मैं एक जनरल एसिड हैलाइड लूं दैट इज CH3COCl और एक जनरल कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लूं, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया मैंने, राइट। आप मुझे बताइए यहां आपने कहा कि जी सब्स्टिट्यूशन होनी है तो भाई पहले तो एडिशन ही होनी है ना। आपने कहा कि यहां एडिशन होनी है, इसका मतलब जाने वाला जाना नहीं चाहता। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन? कि कोई आया तो किसी को जाना होगा। व्हाट इज एडिशन? कोई आया पर कोई जाने के लिए तैयारी नहीं है। कोई आया का मतलब हुआ दिस पाई बॉन्ड विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। इट मीन्स दिस कार्बन विल गेट positive charge. What is the effect of this CH3 group? Plus I. What is the effect of Cl? Minus I. What do you think? Whose addition will be faster? Will the addition be faster in acid derivative halide or it will be faster in carbonyl compound? Because this is showing from here plus I, this is showing from here plus I, am I right? This is showing from here no doubt plus I, but Cl is showing minus I. I am not talking about substitution. Let us say पहले एडिशन तो हो। इसका मतलब हुआ एसिड हैलाइड में ऐड होना आसान है। एसिड हैलाइड के अंदर एडिशन आसान है क्योंकि Cl का विथड्रॉइंग नेचर है। और अगर हम एसीटोन में देखें तो वहां एडिशन मुश्किल है क्योंकि CH3 का प्लस आई इफेक्ट। आप जरा इसको यहां रिलेट करें कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है दैट इज मोर रिएक्टिव, जब डाइअल्काइल कैडमियम है दैट इज लेस रिएक्टिव, बट एसिड हैलाइड इटसेल्फ इज मोर रिएक्टिव। एसिड हैलाइड इटसेल्फ इज मोर रिएक्टिव देन कार्बोनाइल कंपाउंड। सो एसिड हैलाइड कैन रिएक्ट विथ more reactive Grignard reagent readily and can react with less reactive dialkyl cadmium, but less reactive carbonyl can only react with more reactive Grignard reagent, but they cannot react with less reactive dialkyl cadmium. It means the things they are very clear. हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि नॉट कार्बोनाइल, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनाइल का अल्कोहल बना देता है। बट क्या कार्बोनाइल के साथ
डाई एल्काइल कैडमियम जो लेस रिएक्टिव है वो रिएक्ट कर पाएगा। Am I right? इसका मतलब क्या हुआ कि डाई एल्काइल कैडमियम इसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब हुआ कि आप मना कर रहे हो क्योंकि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ना कि वो मोर रिएक्टिव एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट किया, बल्कि वो लेस रिएक्टिव कार्बोनाइल के साथ भी रिएक्ट किया और उसने फाइनल प्रोडक्ट कार्बोनाइल नहीं रखा बल्कि अल्कोहल बना दिया। और कारण सिर्फ इतना है कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैडमियम से कम है, मतलब मैग्नीशियम कैडमियम से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, का मतलब वो कैडमियम से ज्यादा रिएक्टिव है। इसलिए हमने कहा कि भाई अगर आपको ऐसा करना है तो आप ऐसा करें कि एसिड आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे, मैकेनिज्म वी हैव ऑलरेडी डन। Firstly, there will be addition. Yes, no? This will be forming CS3 negative, MgBr positive. This will be going here. It means you will be getting, जब ग्रिग्नार्ड reagent हो तो solvent ether. What you will be getting is CS3 CO negative, MgBr positive, and this is Cl and this is CS3. हो गई एडिशन। हमने कहा भाई यहां सब्स्टिट्यूशन होगी बिकॉज Cl is a good living group. Cl is negative is conjugate base of HCl and HCl is a strong acid, its conjugate base is weak and weak conjugate base is a good living group. इसलिए वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया। तो हम जो अभी बात कह रहे थे कि भाई एसीटोन बनेगा तो बनेगा पर रिएक्शन वहां नहीं रुक सकती क्योंकि वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत रिएक्टिव है। ना कि वो मोर रिएक्टिव एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया बल्कि लेस रिएक्टिव एसीटोन के साथ भी रिएक्ट करने को तैयार है। And we know the mechanism followed by hydrolysis, and we are saying we will be getting tertiary alcohol as the final product, where we will be getting MgBr, MgOH. तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि एसीटोन पे ये रिएक्शन रुके, वो नहीं रुकी। एसीटोन पे रिएक्शन रुके वो नहीं रुकी क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत रिएक्टिव है। इसके बाद हमने कहा कि आप ऐसा ना करो। कैसा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एसिड हैलाइड में मत डालो। आप क्या करो, कैडमियम क्लोराइड लो, कैडमियम क्लोराइड लो और उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में डालो। समझ रहे हो? उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में डालने से क्या हो रहा है कि वो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है रिएक्टिव है, वो डाई एल्काइल कैडमियम का क्या बना देगा, इस डाई क्लोरोकैडमियम का क्या बना देगा, इज डाई एल्काइल कैडमियम प्लस
MgBrCl। यस है ना। और कहता है ये जो डाई अल्काइल कैडमियम है ना, इसको यूज करो तुम। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सीधा एसिड हैलाइड में नहीं डालना है, उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कैडमियम क्लोराइड डाल दो। कैडमियम क्लोराइड डालो क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो Cl के साथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्लोराइड बना देगा और आपके पास बन जाएगा डाई अल्काइल कैडमियम। ये डाई अल्काइल जो कैडमियम है, दिस कैडमियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर, लेस नहीं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, but is less reactive because more electronegative than magnesium. Yes or no? इसका मतलब क्या हुआ कि ये डाई अल्काइल कैडमियम मोर, ये खुद क्या है, लेस रिएक्टिव। पर एसिड हैलाइड क्या है, मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। और इसने बना दिया फिर से CdCl2 और बना दिया एसीटोन। यस और नो? ये एसीटोन कौन है भाई, लेस रिएक्टिव। अभी तो प्रूव किया। और आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करना चाह रहे हैं आप, डाई अल्काइल कैडमियम, वो भी कौन है, लेस रिएक्टिव। सो वी शुड से देयर इज नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। Thus, to prepare carbonyl compound from acid halide, we should use dialkyl cadmium and not. So हमने लिख दिया to prepare carbonyl compound from acid halide, we should prefer dialkyl cadmium, not Grignard's reagent, क्योंकि उससे क्या होगा, टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। यस सर। पर इस रिएक्शन की लिमिटेशन, क्या हमारे पास HCOCl होता है? हमने तो हमेशा जहां भी किया इन सीटू जनरेशन की, HCl और CO से बनाया। इसका मतलब हुआ कि इस रिएक्शन से आप फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना पाओगे। फॉर्मेल्डिहाइड के लिए आपको यहां क्या चाहिए, HCOCl, हो तो होता ही नहीं। सो वी कैन नॉट प्रिपेयर फॉर्मेल्डिहाइड बाय this reaction. Is it okay? Next method of preparation of carbonyl compound is
by dry distillation of calcium salt of the carboxylic acid. You take acetic acid and treat that with calcium hydroxide. What is the product formed? Yes, come on, those who are online. What is the product formed? And calcium hydroxide. When any acid will be treated with strong metal hydroxides, the calcium hydroxide is a diacidic base. Yes, no? So we need 2 moles. And thus we will be getting calcium acetate. Plus H2O. It means if we are taking into account formic acid, we will be getting calcium formate as we got it there in preparation of chloroform or in iodoform test. So we will be getting calcium formate, and calcium hydroxide is a so this is calcium formate plus water. So let us take one different acid, and that is adipic acid. Adipic acid is a dibasic acid. Yes, no? And calcium hydroxide is a diacidic base. So 1:1 equivalent, or 1:1 mole ratio. So when you will be doing this, what you will be getting is calcium adipate. Calcium adipate. Yes, plus water. So we are doing dry distillation of these calcium salts. का मतलब हुआ हम इनको heat करेंगे, and heat करेंगे, and they having calcium salts. So we have done the decarboxylation leads to the removal of CaCO3, calcium carbonate. So let us do the dry distillation. Let us first take the small acid calcium formate. Do its dry distillation. Heat it. When you will be doing the dry distillation,
you will be getting CaCO3 plus you will be getting formaldehyde. Am I right? क्लियर हो गया? आप जो है इन मेथड्स की क्या ड्रॉबैक है कि आप दो के सॉल्ट का मिक्सचर ले लोगे, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सो मेनी प्रोडक्ट्स. कैसे? ये कैल्शियम फॉर्मेट था अकेला, अब आप ले लीजिए कैल्शियम एसीटेट. Is it calcium acetate? The same dry distillation. Do it over here also. The same CaCO3 will be removed. CaCO3 को रिमूव करने के बाद आपके पास बच गया एसीटोन. Am I right? पर आप सोचो कि आपको बोल दिया व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ calcium formate plus calcium acetate, and now you will be getting mixture of the product. You will be getting mixture of product. Mixture of product जो ऊपर बना दिया मैं नहीं बना रहा हूं, मैं कुछ वो बना रहा हूं जो और बनेगा जब वो मिक्स किए जाएंगे. So I will be getting 2 moles of CaCO3. Am I right? I'll be getting 2 moles of CaCO3. I will be getting 1 mole of formaldehyde. I will formaldehyde from here. ये बताया ऊपर. I will be getting 1 mole of acetone. Here I am showing the one different. I will be getting 2 moles of acetaldehyde. No? It means when I will be getting the mixture of the two, I'm getting 3 products. Here I will also be getting HCHO. I will also be getting acetone. I will be getting acetaldehyde. So this method is not used for the preparation, or is not preferred for the preparation of carbonyl compound, because in this method we get mixture of the carbonyl compounds and they all having almost similar properties. But remember one thing, that if you are doing the dry distillation of an acid who is a dibasic acid, you will be getting cyclic carbonyl compounds. This was question in assignment also. It means he is asking what will be the product of dry distillation of calcium salt of adipic acid. Calcium salt of adipic acid means calcium adipate. Is it okay? When it is calcium adipate,
You just heat it, do the dry distillation. You will be removing CaCO3 plus you will be getting cyclopentanone. Yes or no? This we did. And this cyclopentanone with the Wolff-Kishner reduction or Clemmensen reduction is converted into cyclopentane. So by this we are getting cyclic ketones. So this is how we prepare these carbonyl compounds through dry distillation. Now is preparation of these compounds by acidic hydration of alkyne unsaturated hydrocarbon. The reaction which we said is Kucherov reaction. You take acetaldehyde, आया कुछ याद? Treat it with water. This is not really water, this is dilute sulfuric acid. So that dilute sulfuric acid having water, but we know whether this arrow will move to this direction or to that direction, that won't make any difference because this is symmetric. But जैसे ही इसके ऊपर कोई पॉजिटिव अटैक करेगा, क्योंकि ये तो पाई बॉन्डेड है, नेगेटिव वाले को अटैक करने को मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वहां पाई बॉन्ड है एंड नेगेटिव द न्यूक्लियोफाइल विल बी रिपेल्ड बाय these pi bonds because the nature of reaction of alkyne is what? The alkyne is both electrophilic and nucleophilic addition. Alkene is electrophilic addition. Alkene is electrophilic addition. Alkyne is both electrophilic and nucleophilic addition. ऐसा क्यों कह रहा हूं? जब ये सल्फ्यूरिक एसिड का H पॉजिटिव यहां कहीं भी आएगा और ये एरो किसी भी साइड को घूमेगा तो उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा जिस कार्बन के पास पाई बॉन्ड है, और जो कोई नेगेटिव या रिच आएगा वो पाई बॉन्ड उसको रिपेल करेगा, यहां आने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करें? इसलिए हमने पढ़ा था कि एल्काइन की रिएक्शन हमेशा मेटल आयन की प्रेजेंस में की जाती है। मेटल आयन के वहां होने से क्या हुआ? मेटल आयन इज लुईस एसिड, और उस लुईस एसिड ने उस पाई बॉन्ड का ध्यान अपनी तरफ खींच दिया, तू आ जा मेरे साथ बॉन्ड बना ले। इसलिए उसने उस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल नहीं कर पाया और न्यूक्लियोफाइल ने वहां अटैक कर दिया। इसलिए हम कहते हैं कि जो एल्काइन की रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों होती है, एडिशन रिएक्शंस होती है। इसलिए कि जब इस H2SO4 के H पॉजिटिव ने यहां अटैक किया, मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, अटैक किया तो आपके पास HC डबल बॉन्ड रह गया, CH नेगेटिव था, H2SO4 का H पॉजिटिव आया और यहां रह गया पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव तो है पर पाई बॉन्ड भी है,
पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव है, और अटैक करने वाला कौन है? वाटर, जिसके ऊपर कौन है? लोन पेयर। पर उस लोन पेयर को कोई रिपेल कर रहा है, वो कौन है? पाई बॉन्ड। इसलिए आपने उस मेटल आयन को उधर रख दिया कि भाई तो इस पाई बॉन्ड का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, ऐसे या ऐसे। दिस विल बी ट्राइंग टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एम आई राइट? और जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाह रहा है तो पाई बॉन्ड का ध्यान इधर को हो गया। इसका मतलब हुआ उस CH पॉजिटिव के ऊपर जो रिपल्सिव फोर्सेस एक्सपीरियंस हो रही थी, वो रिपल्सिव फोर्सेस अब नहीं है, और उसको अटैक कर दिया किसने? वाटर ने। H2SO4 कहा, मेरा H पॉजिटिव वापस लो। का मतलब हुआ कि भाई दिस विल बी मूविंग हियर, और H2SO4 रीजनरेट हो गया, कैटलिस्ट था वो, पर आपके पास बन गया E नोल। और आपने पढ़ा है कि जब कहीं इनोल बने तो भाई इनोल तो कम स्टेबल होता है, इसलिए वो टॉटोमेराइज कर जाता है। 1 2 3 और टॉटोमेराइज करके 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है, इसलिए बन जाता है ऐसी एल्डिहाइड। एंड दिस reaction is called Kucherov reaction. This reaction is called Kucherov। खुश रहो, बिल्कुल नाराज होने की जरूरत नहीं है। This reaction is called Kucherov reaction. Yes or no? So if it is Kucherov reaction, you complete the next reaction. This is CS3 C triple bond CH on treatment with dilute H2SO4. And mercuric metal ion, what the product you will be getting. Don't you think this is similar to the acidic hydration? वही तो है ये. Yes, Harry. I don't want to make any mechanism now because in acidic hydration there was Markovnikov's rule. Yes, we have done that. This will be shifting here. And when this will be shifting here, in the previous slide we did the mechanism. So I'll be getting E node. Yes or no? Is it okay? And this enol will be tautomerized to form ketone. And hence we are getting acetone. Yes or no? But you just remember, याद करो वो reaction in which we treated it with B2H6 H2O2 and the name of reaction was hydroboration. Was following means this
with B2H6 will be forming, see, this B2H6 is half B2H6 and half B2H6 is nothing but boron hydride. Yes or no? And this boron hydride having 3 हाइड्रोजन्स, बार बार जब तक तीनों का अटैक नहीं हुआ, दिस विल बी फॉर्मिंग H नेगेटिव, और ऐसा करने से आप पहले ऐसे हो जाओगे, फिर जब बोरोन हाइड्राइड मींस H नेगेटिव, ऐसा करने के बाद आपने इसके अंदर एक H डाला तो ये बन गया BH2। आपने ऐसे 3 मोल लिए, यस और नो? 3 मोल लिए तो कुछ ऐसा बन गया। आपने फिर H2O2 से कार्बन बोरॉन बॉन्ड तोड़ दिया और आपके पास बन गया बोरिक एसिड। यस, आपके पास बन गया CHOH। जो इनोल है आपके पास बन गया CH3 CH2 CHO, जो उसका आइसोमर है। उसका फंक्शनल आइसोमर है। सो विथ डाइबोरेन वी गेट द आइसोमेरिक कार्बोनाइल कंपाउंड, वी गेट द आइसोमेरिक कार्बोनाइल कंपाउंड। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां है, आपको बार बार 3 बार ये स्टेप करना होगा। इसलिए इसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढा गया। जिस तरह से आपने क्या किया, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब उस एल्यूमिनियम के 3 हाइड्रोजन ना रख के एक ही हाइड्रोजन रखा, ताकि आप उसकी एक टांग काट दोगे तो वो स्ट्रांग नहीं एक्ट कर सकेगा। आपने ऐसे ही क्या किया कि BH3 के 2 H हटा देते, 2 H हटा देते। 2 H हटा दोगे तो 3 स्टेप नहीं, एक ही स्टेप की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इस R ग्रुप को हम थोड़ा बल्कियर ग्रुप लेते हैं। यह है वो R, यह है वो BH। दिस इज डिसएमाइल। 5 कार्बन को एमाइल कहते हैं, डिसएमाइल बोरेन। डिसएमाइल बोरेन से क्या हुआ, 3 स्टेप के बजाय काम एक ही स्टेप में हो गया। एक स्टेप में हो गया, प्रोडक्ट वही बना, बट जब बार बार आप बोरोन के जो 3 मोल उधर आप एल्डिहाइड उसके अल्काइन के लेते थे, वो 3 मोल की जरूरत ही नहीं है, प्रोडक्ट भी वही है। बट ये हो गया कि डिसएमाइल बोरेन से आपका काम आसान हो गया, ठीक हो गया। पर अगर आपके पास पेंट 2 करो, इसके अंदर डाल दो डाइल्यूट H2SO4 Hg2 पॉजिटिव
अब भाई यहां भी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहां भी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एम आई राइट? इसका मतलब हुआ आप बोलोगे सर दो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो बन रहा है पेंटेन 3, एम आई राइट, और एक बन रहा होगा पेंटेन 2। अब इसमें आप नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते क्योंकि दोनों के पास ही हाइड्रोजन नहीं है। In this case, this will be counted as major product due to less steric factor. This will be counted as minor product. Alkyl group जहां दोनों साइड बड़े बड़े होंगे वो माइनर है, एक साइड छोटा अल्काइल ग्रुप है तो वो मेजर प्रोडक्ट माना जाएगा उस केस में। यस। Next method of preparation of carbonyl compound is the method we did in +1 was used to locate the position of unsaturation and the name was reductive ozonolysis. The name was reductive ozonolysis. We are being said कि भाई आप जो है ये बताओ कि प्रोपीन का प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस क्या होगा। देखिए दो बातें हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। वन इज ओजोनोलाइसिस एंड वन इज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। जब कहीं रिएक्शन के ऊपर लिखा होता है तो आप उसको ढंग से देख लें कि क्या लिखा हुआ है। आपको इस तरह से दिया हुआ है और पूछा है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। We did with benzene the ozonolysis and there we said that the nature of reaction of ozonolysis is addition. इसलिए ओजोनोलाइसिस किसी अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड पर होती है, किसी सैचुरेटेड वाले में ओजोनोलाइसिस नहीं होती है। इसका मतलब ओजोन वहां आया और डबल बॉन्ड पर आकर बैठ गया। आपको पता है ओजोन में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसलिए उस ओजोन ने अनसैचुरेटेड कार्बन पर आकर ओजोनाइड बना दिया। जब उसने ओजोनाइड बना दिया तो ये जो है 5 मंजिल बिल्डिंग बन गई कि नहीं बन गई। अब ये ओजोनाइड का ये ओ जो है ये अकेला है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड, ये O निकल जाता है और H2O2 के साथ मिलकर H2O के साथ मिलकर H2O2 बनाता है। और H2O2 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एक्शन हमने इसका पढ़ा है। जब ये यहां चला जाता है इस कार्बन की बैलेंसी गड़बड़ हो गई, इसलिए ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं। जब ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुए तो CH3CH डबल बॉन्ड O हो गया। ऐसे शिफ्ट हुए तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। एक जहां एसिटाल्डिहाइड बना तो दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड बना। बट ये कौन है? ये कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये H2O2 H2O में कन्वर्ट हुआ और उसने इन कार्बोनाइल कंपाउंड की शक्ल बिगाड़ दी और कार्बोनाइल कंपाउंड के बना दिए कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स। और हम ऐसा नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि हम कार्बोनाइल कंपाउंड को प्रिपेयर करते। इसलिए हम इस H2O2 में जिंक डालेंगे ताकि वो जिंक who is a reducing agent get converted into zinc oxide and H2O so that the further reaction
will not be possible. तो ये इससे आगे रिएक्शन तब होगा अगर आपने जिंक यूज नहीं किया. अगर आपने जिंक यूज किया, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिंक कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट है. इनकी रिडॉक्स रिएक्शन यही हो गई और इस H2O2 की फर्दर ऑक्सीडेशन करने के चांसेस खत्म हो गए. समझ में आ रही? इसलिए अगर आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करने को दी गई जो हमने असाइनमेंट में की, व्हाट यू विल बी डूइंग ऑफ दिस, what will the product of this reaction? What will the product of this reaction? Come on. Yes, those who are online. What will be the product of this reaction? Yes? My answer is this. How many of you got it? When it is ozonolysis, this is not reductive ozonolysis. It means double bond is here. This ozonolysis will break this bond. And when it will break this bond, would you get hexanediol? And that hexanediol, is it reductive ozonolysis? No. It means that hexanediol will be oxidized. Because this is not reductive ozonolysis. Will be oxidized by what? By H2O2. And hence this X will not be hexanediol. This X will be adipic acid. Don't you think so? This X will be adipic acid. So this X is adipic acid. And this adipic acid treated with BaO aqueous. It means this is nothing but is barium hydroxide. Am I right? It means I should say this Y is barium adipate. No, this Y is barium adipate. And then barium adipate on
dry distillation. Barium adipate is why? And this barium adipate on dry distillation, what you will be getting is minus barium carbonate, and the product is cyclopentanone, which when treated with zinc, mercury, HCl, the name of the reaction is Clemmensen reduction, and we will be getting cyclopentane. Yes or no? What will be the product of the ozonolysis of propine? I should say now reductive ozonolysis, क्योंकि हमने क्या बनाना है? कार्बोनाइल कंपाउंड बनाना है. So I should do the reductive ozonolysis, that is ozone with H2O and in presence of zinc. Remember one thing, very important one. This zinc nowadays has been replaced by dimethyl sulfide. This is also reducing agent and form dimethyl sulfoxide. That is DMSO. DM. इससे क्या फायदा हुआ मैं आपको बताऊं कि जो डाइमिथाइल सल्फाइड है ये गैस है, जो अनयूज्ड होगी वो चली जाएगी. पर अगर आपने यहां एक्स्ट्रा जिंक डाला तो जिंक और ओजोन भी मिलकर जिंक ऑक्साइड बना सकते हैं. का मतलब हुआ जब यहां ओजोनोलाइसिस होगा तो कहां होगा? ट्रिपल बॉन्ड पे होगा. ट्रिपल बॉन्ड पे होगा तो बैलेंसी पूरी नहीं होने वाली, इसलिए वहां 2 मंजिल बिल्डिंग बन जाएगी. यस और नो? और जो एल्काइन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट होता है उससे कभी भी सीसी बॉन्ड नहीं टूटता. जरा ध्यान दे, यहां ये O और वो H2O मिलकर बना देंगे H2O2, और उस H2O2 की प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए हमने डाला है जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड, जो जिंक ऑक्साइड बना देगा और H2O2 कन्वर्ट हो जाएगा H2O में. अब जब ये O गया तो इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट होना होगा, इधर शिफ्ट होना होगा, एंड वी गेट dicarbonyl group on the same compound. Diketone, dioxo compounds. और इस रिएक्शन की खास बात ये थी that this was used to locate the position of unsaturation, means thereby आप इस O को उड़ा दो, you will get back from where you started. So this application is to locate the position of unsaturation. इसलिए आप जब ओजोनोलाइसिस कर रहे हो
तो आपको कहा गया कि इस कंपाउंड का ओजोनोलाइसिस करें। What will be the product of ozonolysis of this compound? अब मेथड हमने कर लिया, so I will tell you now the shortcut method how to achieve all this. This will be H2O, zinc or dimethyl sulfide, and you are doing ozonolysis. एक सेम रिएजेंट होता है जो वही काम करता है जो ये कर रहा है, उसका नाम होता है, yes anyone, the name is Lamux reagent. Lamux reagent is sodium periodate with the traces of KMNO4. Sodium periodate with the traces of KMNO4. Yes or no? अब आप क्या करोगे? आपने कुछ नहीं करना है भाई। आपने क्या करना है? जहां भी अनसैचुरेशन है उस अनसैचुरेशन को खत्म कर देना है। कर दिया? और जहां जहां वो अनसैचुरेशन खत्म हुई वहां वहां डबल बॉन्ड O लगा देना है, क्योंकि ओजोनोलाइसिस में 3 O होते हैं पर प्रोडक्ट में 2 ही जाते हैं। एक तो जिंक ऑक्साइड बनाता है। अगर आपको पूछा गया कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, बताओ कि एल्कीन कौन रही होगी? जिस भी कार्बोनाइल कंपाउंड में 2 O होंगे उसको बीच में रखना है और फिर रिमूव कर देना है वो O। वापस आप जहां से चले थे वहीं पहुंच जाओगे। यस सर, क्लियर हो गया? So this ozonolysis, which is used to locate the position of double bond, position of unsaturation, is used to prepare the carbonyl compounds. इसलिए हमने आपको कहा था कि बेंजीन की एडिशन रिएक्शन बहुत रेयर है। एक तो आप क्लोरीन लाइट की प्रेजेंस में डालते हो तो बन जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और एक आप उसमें ओजोन डालते हो तो वहां एडिशन हो जाती है, उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है। का मतलब साफ हो गया कि आपने इसमें ओजोन डाल दिया, आपने इसमें जिंक डाल दिया और डालने के साथ ओजोनोलाइसिस कर दिया। एक डबल बॉन्ड के लिए 1 ओजोन लगता है और यहां 3 डबल बॉन्ड है। यस सर, इसका मतलब हुआ, मैंने अभी भी कहा, ओजोनोलाइसिस का तरीका यही है कि जहां डबल बॉन्ड है आप उसको उड़ा दें। जहां डबल बॉन्ड है जब आपने उसको उड़ा दिया, आपके पास ये बचा, आपके पास ये बचा, आपके पास ये बचा। यस और नो? जब ये बचा तो डबल बॉन्ड O लगा दो, ये बचा तो डबल बॉन्ड O लगा दो। So we got 3 moles of glyoxal. Yes or no? The same you can do when one is asking you what will be the product of ozonolysis of toluene. और वो आपने देखना है कि उसने डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या दी है,
वरना प्रोडक्ट डिफरेंट भी हो सकता है। ये भी टॉल्वीन है, और अगर देखें तो ये भी टॉल्वीन ही है। का मतलब साफ हो गया कि अगर ये डबल बॉन्ड की पोजीशंस बदल जाती है तो नाम तो भैया फिर भी टॉल्वीन ही होगा। यस, क्लियर है? क्या प्रोडक्ट में फर्क आएगा? यहां नहीं आएगा। अगर आप जाइलीन लोगे वहां आएगा। इसका मतलब ये भी टॉल्वीन है, वो भी टॉल्वीन है। आप जब इसकी ओजोनोलाइसिस करोगे तो ओजोनोलाइसिस से जब डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा तो वो डबल बॉन्ड खत्म होने के साथ अगर आप यहां आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है तो वहां भी आपका यही बनेगा। So there are 2 moles of glyoxal and 1 mole of 2-ketopropanol. But definitely the difference will be there when you will be doing xylene. And he is saying find out the product of ozonolysis of orthoxylene पैराजाइलीन। अब जाइलीन तो ये भी है, ये भी ऑर्थो ही है और ये भी ऑर्थो ही है, बट द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस विल बी डिफरेंट। Yes or no? The product of ozonolysis will be same for mesitylene. आप डबल बॉन्ड जहां मर्जी लगाओ, in case of mesitylene the product will be same, पर जाइलीन में तो डिफरेंस आ जाएगा। अगर हम इस वाले जाइलीन को कर रहे हैं तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और हमारे पास एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ब्यूटेन 2,3 डायोन। यस सर, ये बन जाएगा दिस इज glyoxal whose IUPAC name is ethane diol. Here it will be again glyoxal, तो 2 मोल इसके आए, but here it will make the difference. ये यहां से टूट जाएगा। जब ये यहां से टूट जाएगा तो एक इधर को बना, तो एक इधर को बना, मतलब 2 प्रोडक्ट तो ये बन गए। यस नो? एंड दिस विल क्लीव फ्रॉम हियर, विल क्लीव फ्रॉम हियर, एंड वी विल बी गेटिंग 1 मोल ऑफ ग्लायोक्सल। तो फर्क पड़ेगा, पर यहां अगर आप करोगे तो सब के सब का प्रोडक्ट सेम होगा, क्योंकि यहां से टूटा, ये यहां से टूटा, ये यहां से टूटा। जहां से भी टूटा यू आर गेटिंग CH3 2-ketopropanol। कितने मोल? 3 moles. So this is how we get the carbonyl compounds from unsaturated hydrocarbons.
The product of ozonolysis of an alkene with 7 carbons was two moles of acetaldehyde या सीधा लिखो 1 mole acetaldehyde and 1 mole pentane 2-one butane 2-one 1 mole butane 2-one acetaldehyde and 1 mole butane 2-one. What that 7-membered alkene would happen. इसका मतलब हुआ इसमें तो कितने हुए, सिर्फ 6 ही हुए. इसका मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड है जो भाग गई है. So you will take 1 mole of CO2. And in this mole of CO2, this O and this O, this O and this O, so 2 O2 will go and we will be getting CH3, CH, double bond, C, double bond, C, yes, no, CH3, CH2, CH3. 4 और 3 7. 1 2 3 1 2 3, so it should be from here. Yes or no? So this is that alkene. Now is the nature of reaction of carbonyl compounds. Nature of reaction of carbonyl compounds. After doing the preparation, we are into the nature of reaction. The simplest carbonyl compound is formaldehyde. This is the simplest carbonyl compound. After formaldehyde, we are having acetaldehyde. Then is acetone. इस तरह से ये डिफरेंट कैटेगरीज एलिफैटिक में बनती रही. और इसके अलावा हमारे पास है एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसमें ये H है, तो ये बेंजीन है.
ये बेंजाल्डिहाइड है, ये एसिटोफिनॉन है, तो ये बेंजोफिनॉन है। Yes, no? So the nature of reaction is nucleophilic addition. One nature of reaction is nucleophilic addition. We know that the nucleophile being electron rich needs an electron deficient site. So any group who will be electron releasing and will be making the carbonyl carbon rich. What is the induction effect shown by H? No induction. No induction effect, but yes, there is plus I effect. No induction, no, there is plus I, which make this carbon rich. There is more plus I, which make this carbon more rich. Yes or no? Is it okay or not? This will be showing plus R, will making the carbonyl carbon more rich. Not only plus R, but plus I from there. So carbonyl carbon will be more rich. This will be showing plus R from here as well as plus R from here. Thus the carbonyl carbon will be rich and it will be very difficult for the nucleophile to attack. So the decreasing order of nucleophilic addition will be this. Is it okay? This means that the benzophenone is least reactive in the nucleophilic addition of carbonyl compounds. This is electronic factor. ये जो decide कर रहा है कौन है is whether the site is rich or deficient. So this factor is इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर बता रहा है कि ये ऑर्डर होना चाहिए उनकी रिएक्टिविटी का। हमने कहा कि एक दूसरा फैक्टर है उसको भी पूछ लेते हैं और उस फैक्टर का नाम है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर कहता है कि जितना कार्बोनाइल ग्रुप बड़ा होगा उतना हिंड्रेंस ज्यादा होगा और जितना हिंड्रेंस होगा उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। सो दिस फैक्टर डू सपोर्ट द प्रीवियस ऑर्डर, दैट इज मोस्ट reactive is
formaldehyde and least reactive is benzophenol. So this steric factor do support the same order. So formaldehyde के बाद acetaldehyde के बाद acetone के बाद benzaldehyde के बाद acetophenone and acetophenone के बाद benzophenone. Yes or no? So steric hindrance do support the same order. So first reaction is a reaction with HCN of carbonyl compound. HCN. Yes. Acetone is more reactive than benzaldehyde क्योंकि in benzaldehyde there is plus R effect of aryl ring. In acetone no doubt from both sides there is plus I effect, but plus R dominate over that. So the aromatic carbonyl compounds are less reactive than aliphatic. Benzaldehyde, benzene ring shows plus R effect. So addition will be very difficult. So this will be giving rise to CS3, C, H, OH and Cn. And we all know we have done cyanide on hydrolysis form carboxylic acid, and this hydrolysis carried out in presence of acid as well as base. पर isocyanide सिर्फ acid के साथ ही hydrolyze होते हैं. So when it will be hydrolyzed, you will be getting CH3CH, OH and COOH was the first acid which we took as an example of the chiral center during stereochemistry, and the name was lactic acid. It means this followed by hydrolysis, we will be getting two product. One is R and one is S, because this is optically active as it having chiral center. Yes or no? So lactic acid do have chiral center. So this will be showing optical isomers. Do the same reaction with, if you will do the reaction with acetone, how many products you will be getting? Will it be one or will it be two? With acetone, how many products you will be getting? With acetone, I will be getting optically inactive product, and hence I will be getting only one product because it is not optically active.
आपने एसीटोन में HCN डाला, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू विल बी गेटिंग? बोलो. Followed by hydrolysis. So you will be getting only one product because there is no chiral center. But with acetaldehyde you will be getting two products. What about when you do the same reaction with benzaldehyde with HCN followed by hydrolysis? We did an assignment. The product which we will be getting is, the name was COH, COOH and H, and this we did in assignment. The name was mandelic acid. The name was mandelic acid. No? And it was optically active. Will be giving two products as it having one chiral center. Yes or no? So the next reaction is a reaction of carbonyl compound with sodium bisulfite. This is carbonyl compound. Its reaction with NaHSO3, Na positive, HSO3 negative. This will be going here, but we did that. इस रिएक्शन का एक खास फायदा है, क्या है ये बताएंगे. CH3CH O negative Na positive and SO3H. इसका क्या फायदा है is just see here. This is used for purifying the carbonyl compounds. इसलिए आपने क्या किया, इम्प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया, उसको सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ट्रीट किया. आपको मैं बता दूं, metal ion would always like to remain with conjugate base of strong acid. Why? क्या अल्कोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? नहीं है. पर अगर ये मेटल आयन इधर आ जाए तो दिस SO3 नेगेटिव इज विद 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. तो अगर कहीं आगे भी ऐसा कहीं दिखे आपसे कि वहां जो है मेटल आयन किसी ऐसे कॉन्जुगेट बेस के साथ है जो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो और आप बना दोगे ऐसा. अब उस इम्प्योर में से जो रिएक्ट किया वो सिर्फ कार्बोनाइल रिएक्ट किया और उसने क्या बना दिया, यहां सॉल्ट बना दिया है, सॉल्ट. अब आप इसमें बेस डालो.
This base with salt will be forming sodium bisulfite plus H2O, plus you will get back from where you started, but the difference is this is now pure, क्योंकि impurity तो react नहीं की भाई. So this is pure acetaldehyde now. तो ये आप एसिड के साथ भी कर सकते हो, ये आप बेस के साथ भी कर सकते हो. बेस के साथ किया तो ऐसा होगा, एसिड के साथ करोगे you will be getting NaCl. You will be getting H2O. You will be getting acetaldehyde, but again in pure form. 3 और 1 4 O में से आपके पास 2 O ही हैं. यस नो. H और 1 और 1 2 H H2O है. इसका मतलब और जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो कैसा है? प्योर है. पर ये सभी की प्योरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो, पर बेंजोफिनॉन इज द लीस्ट रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड दैट डू नॉट गिव दिस रिएक्शन. बेंजोफिनॉन के साथ नहीं. नॉट फॉर बेंजोफिनॉन. क्यों नहीं? क्यों नहीं? दिस इज लीस्ट रिएक्टिव. क्लियर हो गया या नहीं हो गया? नेक्स्ट इज द characteristic reaction of carbonyl compound. We'll be doing in next class. So thank you very much. Have a nice time. So thanks everyone. Very happy Dashera.